Okay. Tell me something about yourself. Okay. First of all, thank you for giving me this opportunity. My name is Shweta and I'm from Gurugram. I qualified to my chartered accountancy exam in November 22 and I'm currently working in a CA firm as an intern. And coming to my articleship, I did my articleship from Sanjay Gupta and Company, which is a mid-sized firm. During my articleship, I got to work in start audit, taxation, GST compliances, and finalization of books of accounts and preparation of financial statements. In start audit, I did audit of areas like revenue, PPE, employee benefit expense. And in GST, I'm responsible for monthly compliances like filing of GST R1, 3B, and taxation. I'm responsible for computation and filing of income tax return of individuals and corporates, and followed by rectification if if any notice uh, sent by the income tax department. And uh, I'm a quick learner and a very good team player. So I want to join Macquarie because Macquarie being a global organization having around 19,000 employees and working in 34 markets would be the best start I would ever get. In Macquarie, I would be given opportunity to learn new skills and develop new ideas and work in a complex environment. So I'm really excited for this opportunity. What do you know about the business model of Macquarie? Macquarie is an Australian company, and the main business is asset management, which is the second largest in the world, followed by capital markets, and it also deals in energy sectors and green energy sectors. And so- Right. Uh, what are the competitors of Macquarie? no idea, sir, but I would love to Okay. search. What are the job roles in Macquarie that you will be interested in? Sorry, sir, can you What please are the job repeat? roles that you will be interested in? Okay, I'm What do you think? interested. What do you think that the job description will be out here? The job description is about the job description is of financial management group, which involves application of Indian accounting standards along with IFRS, and the knowledge the uh, Okay. Why you want to join application. Macquarie? Give us reasons why you want to join Macquarie. Why do we hire you? I want to join Macquarie because Macquarie being a global organization and having around 19,000 employees and working in 34 uh, markets would give me a global exposure I'm looking for. And as a Macquarie ensures the all the employees here get the chance to develop their new chance to develop these skills and work in a complex environment along with improving and impacting people's life. Sorry. Yeah. Deferred tax asset. What is deferred tax asset? So deferred tax asset is created when there is a temporary timing difference. Means they as per Income Tax Act, certain expenses are not allowed, but in accounting we allow the expenses like if coming to a depreciation, like depreciation as per Income Tax Act, the depreciation calculation is not on days, but in accounting the depreciation is calculated as per days. So the differences here arise. These are the temporary differences, and for this reason, deferred tax asset and deferred tax liability is created. It depends if the company that has paid more tax, deferred tax asset will be.
created, and if it has future liability to pay the tax, deferred tax liability will be created. What are the recent budget amendments? Sir, budget amendments, major amendment is income income tax act. The old regime would the new tax regime would be would be the actually new tax regime will be the default regime, and if someone want to go for the old tax regime, he has to select. And the in new tax regime, the government has there is no income tax up to 7 lakh, and there is a changes in 44 AD and ADA. The limits has been increased to 2.3 crores, and for ADA the limit has been increased to 75 lakhs. Okay. When do we recognize how FBTPL, FBTCI, and amortized cost? When are the financial asset liabilities will be recorded in each of them? Sir, as per Ind AS 109, the financial assets would be categorized in amortized cost, FVTOCR. FVT depends on the business model of the entity. If the entity has intention to hold the asset till maturity and collect the contractual cash flows, which comprises generally interest and principal, it will classify the financial asset as amortized cost. And coming to FVTPL, if it is held for trading purpose, it will categorize the financial asset as on FVTPL category. And FVTOCI, if the entity intention is not to hold the asset till maturity and to collect the contractual cash flows, like interest and principal, which it will be categorized FVTOCI. Generally, derivative assets are categorized at FVTPL only, or FV transfer. Example of FBTPL, a Derivative assets, it is derivative asset are always FBTCI. FVT OCI. Uh-huh. Sir, actually, the entity has the option to categorize the equity instrument on FVT OCI category, but it is irrevocable decision. Once they go for FVT OCI, Example, it cannot like, sir, example, equity instruments like and amortized cost. amortized cost, like, sir, the like security deposits, or company has given loan to its employees, or the parent company has given loan to its subsidiary, and vice What is versa. expected credit loss? Sir, expected credit loss is the difference between present value of cash flow due to the entity and present value of cash flow expected by the entity. There are two types of ECL: 12-month ECL and lifetime ECL. 12-month ECL is recognized when there is high risk, and the lifetime ECL is recognized when there is actually 12-month ECL is recognized when there is low risk, and 12-month lifetime ECL is recognized when there is high risk. The answer you said, na difference between that. You need to check that Or expected difference. credit loss. Okay, that needs to be checked once. Okay. That Then what? Why the Index 116 was introduced? Sir, 116 was introduced to include off-sheet balance items in balance sheet. Like earlier, the like for example, telecommunication tower usually lease the area for installation of its tower. Earlier, they used to recognize these in PNL statement, and the usual of financial statement. They don't it. User a financial statement, it did not give it true and fair view of financial statement, as user of financial statement was unaware about the all. सर आई विल ये मेरे को देखना है सर, इसको ये देखना है. Okay. 115 5-step model. 115 5-step model start with the ये तो क्या होता था? एक मिनट. Determining the contract with customer, identifying the performance obligation, determining the transaction price, and allocation of transaction price on performance obligation,
and finally the recognition of revenue for. Control transfer over a period of time at a point of time. Okay. Sir, Okay, the control transfer over a period of time or at a point of time, recognizing revenue. Last point. okay, the Uh, control transfer over a over a period of period. time or at a point of time. Okay. What is the difference between this Ind AS and the earlier AS? These are 115 control साल. Hmm. transfer over a period of time is example uh, would be of construction service, because the My control question is is, what is the difference between this Ind AS and the earlier AS? Why this Ind AS was introduced 115? What is the uh, basic difference between both the Ind AS? sir, I Okay, have to, write it down. Huh? I will know the 115 answer. and AS 9. I will do research on that. So Control transfer, earlier it was risk and reward transfer. So in the Excel sheet, all everything is written. It was a control transfer. Now earlier it was your risk and reward transfer. In India's 115, it is a revenue measure at transaction price, and in the AS it is revenue is at the gross inflow of the cash and cash equivalents. Then there is a breakup also of the individual elements within the transaction price. There is no such breakup, and then this time value element out here. There is no such time value element in AS9. The time value of money element, so that you can learn it already in Excel sheet we have provided. Um, time value. time value of money, it is already in the Excel sheet which we have provided. Okay, that you will get there. Okay, you go to the Excel sheet, we have mentioned that. Apart from this, okay, what is your greatest strength and what is your greatest weakness? Sir, my greatest strength is I'm determined and consistent and highly ethical person. And Weakness? I finish whatever I start. I never left anything, any target in between, no matter how hard it is. And my weakness, I have hard time to say no to any work. So it sometimes creates a problem for me. So जब आप बोल रहे हो ना तो थोड़ा सा कंप्यूटर को डाउन लाइए, जो भी है वो आपका स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा है, दैट यू नीड टू इम्प्रूव, थोड़ा वो डाउन लाइए. इट हैज टू बी लाइक दिस, कि वो थोड़ा, हाँ, दिस यू नीड टू इम्प्रूव. ओके. और तो स्माइल करिए, स्माइल थोड़ा कम आ रहा है आपका, ठीक है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव अ गुड स्माइल, दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड. तो जो आपने ये बोला ना जस्ट अभी, तो इसको आप बोल सकते हैं कि आई हैव टीम लीडरशिप स्किल्स एंड टीम स्पिरिट. oh yeah, आई हैव लीडरशिप leader स्किल्स एंड टीम स्पिरिट. ये वर्ड्स आप team ज्यादा spirit. यूज करेगा कि आई हैव वर्कड इन द टीम्स, आई नो हाउ टू मैनेज टीम्स, आई एम अ टीम प्लेयर, इफ एनीबडी इज इंजर्ड आई विल डू द वर्क फॉर हिम आल्सो, द टीम, if the work demands that time. Leadership skill is very important. I have managed my articles, I have led the project single-handedly, I've been the deadlines. Okay, so I can work late hours to complete the project. I can help my juniors to work there. So these are things you can say as a strength. Weakness is it, I cannot say no, you should not say this. Okay, ये वाला हर कोई Real यही बोलता है. reality. हाँ, ये वाला चीज थोड़ा सा वो हो जाएगा. इसको नहीं बोल के आप ऐसे बोलो कि initially that in my article see I used to be very curious about learning everything. So in that Sir, curiosity I used to do everything very quickly. समझ रहे हैं? sir, तो वो आप बोल सकते हैं, एक ज्यादा से बेटर है. रिपीट, वीकनेस रिपीट करते हैं. वीकनेस ये कि आपको बहुत हड़बड़ी था काम सीखने को लेके, तो उसके कारण क्या हुआ, आप फटाफट में ज्यादा काम कर लिए और गलती करने लगे हो काम में. मतलब होता है ना, जब आप आर्टिकल से भी घुसता है तो बहुत ज्यादा वो रहता है, हड़बड़ी रहता है लोगों को काम सीखने का. तो उसमें काफी गलती कर देता है, और गलती करने से सीनियर फिर डांटता है, प्रिंसिपल डांटता है, फिर काम नहीं देता है. तो वो एक्सपीरियंस आपको सीखने को Efficiency. मिला कि परफेक्शन बहुत जरूरी है काम में. अगर कोई काम दे रहा है तो उसको आपको सेल्फ रिव्यू करना बहुत जरूरी है वो काम को. तो इनिशियल लेवल में था पहला 6 मंथ, फिर मेरे को ये चीज समझ में आया कि आई नीड टू सेल्फ रिव्यू माई वर्क. समझ रहे हैं? तो सेल्फ रिव्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू नीड टू डू योर सेल्फ सर रिव्यू ऑफ ये योर बोल वर्क. सकते हैं, जैसे कि कोई भी टॉपिक हो, जैसे कि कोई भी काम देते हैं, तो जैसे कि प्रिंसिपल ने बोल दिया कि ऐसे कर दो, पर जैसे मेरी आदत है, जब तक मैं पूरा स्टडी नहीं करती तब तक मेरे से काम नहीं कर पाती हूँ. मतलब मुझे पूरा बैकग्राउंड चाहिए कि क्या है, क्या काम दिया है, तभी हो पाता है. तो ये वीकनेस में हो सकता है. बोलिएगा अभी ये सब चीज अच्छा नहीं लगेगा, बिकॉज फिर वो डेडलाइंस रहता है. अगर जरा आप सोचने में टाइम लगा देगा तो लोगों को पसंद नहीं आएगा ये चीज. ओके, डेफिनेटली. ठीक है. ठीक है, ये डेफिनेटली पसंद नहीं आएगा. ठीक है. हम्म. कॉम्पिटिटर मैक्वेरी. तो ये आप एक पॉइंट बोल सकते हैं. ठीक है.
सर एसएफएम से क्या पूछेंगे? एसएफएम से SFM में 115 100 क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, क्रेडिट डिफॉल्ट सर स्वैप। Sir, credit default swap is when the entity extinguishes its financial liability by issuing equity instrument. एंड जस्ट गिव मी अ मोमेंट। क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप आपने बोल दिया, ठीक है। देन व्हाट इज योर टेक ऑन द ग्लोबल इकोनॉमिक्स राइट नाउ? व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन द कंपनीज लाइक मैकेरी फॉर दैट? एक सेकंड में एक बार नोट कर देती हूँ। Impact of the global economics, macroeconomics on the companies like McCary, investment banking firms. What will be the impact? मैक्रो इकोनॉमिक जो भी इन्वेस्टमेंट ग्लोबल बैंकिंग, इकोनॉमिक चल रहा है, अभी इन्फ्लेशन रेट हाई है, जो भी चीज चल रहा है, उसका इम्पैक्ट क्या सर होने वाला है कोई भी कंपनीज में? हाँ। like as per my take, the global economic impact on Macquarie is not gonna. As I've read the financial annual report of the Macquarie and have seen an interview of the director of Macquarie. The during the COVID period, the Macquarie outperformed its competitors. So I don't think Macquarie would be much impacted by the economic slowdown. It has the capability and to come to face the economic slowdown as they have did in during the COVID uh, during the COVID time. What is the NAV of a mutual fund? NAV of mutual fund is the difference of total asset and the liabilities payable divided by the number of units. So difference of total assets and the liabilities payable. And And hedge fund versus mutual fund, what is the difference? hedge funds and Hedge mutual fund versus funds. mutual fund, yes. Hedge funds, the hedge Hedge fund funds, versus mutual fund, yes. the hedge funds is a partnership of the investors. एक मिनट सर मैं भूल गई एक्चुअली, पर एक्चुअल डेफिनेशन भूल गई हूँ, पर डिफरेंसेस याद है सर। सर आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही Hedge म्यूट। fund is for high net worth हाँ individuals. ये सर मेरे को Mutual fund डिफरेंसेस for याद है, different लेकिन प्रॉपर डिफाइन नहीं कर पा रही। जैसे कि हेज is a फंड्स इज लेस रेगुलेटेड, इट इज फॉर हाई वेल्दी इन्वेस्टर्स एंड वाइल आपका म्यूचुअल क्या फंड। गलती हो रहा है मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या फीडबैक्स है। आपको कोई भी आंसर याद करना है, वट एवर आंसर यू आर ट्राइंग टू लर्न, आप नोटपैड में लिखो आंसर को और उसको आप 3-4 बार मेरा प्रैक्टिस करो। दैट इज द प्रॉब्लम। या आपको स्ट्रक्चर करने में दिक्कत आ रहा है आंसर्स को, नंबर वन। और आपका स्पीकिंग का प्रॉब्लम हो रहा है। मेमोरी स्किल है आपका प्रॉब्लम दो है, एक मेमोरी में आपको याद नहीं रहता चीज, दूसरा आपका बोलने में दिक्कत आ रहा है। मेमोरी में याद नहीं रह रहा है क्योंकि आप मेरा प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, चीज को 3-4 बार बोल रहा नहीं है। एक आंसर को लिख के आपको 3-4 बार उसको रिवाइज करना पड़ेगा, 5-6 बार रिवाइज करना पड़ेगा, जब तक वो अच्छा से याद नहीं हो जाता है। आप आधा पर्दा में ही याद करके छोड़ दे रहे हैं उन चीजों को, ये कारण से वो पूरा याद नहीं हो पा रहा है। आप एक आंसर को पूरा अच्छा से गो थ्रू नहीं कर रहा है, उसको आईना के सामने 2-3 बार बोल रहा नहीं है, बिना देखे लिख रहा नहीं है, इसके कारण वो आंसर याद नहीं हो रहा है आपको। तो वो सर वो इंडेक्स। प्रोसेस आपको, हाँ वो प्रोसेस का आपका प्रॉब्लम है। आपको पेशेंस नहीं है, या आप याद करने का कोशिश कर रहे हैं, आप याद पेशेंस के साथ नहीं याद कर पा रहे हो, आपका प्रोसेस सही नहीं है याद करने का। इसके कारण आपका मेमोरी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, नंबर वन। नंबर टू, आपका प्रॉब्लम आ रहा है कम्युनिकेशन स्किल में। आपका कम्युनिकेशन स्किल में आप जब बोल रहे हो तो आपको फ्लुएंसी नहीं आ रहा है इंग्लिश में।
ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम, बिकॉज मैकेरी, गोल्डमैन, जेपी मॉर्गन, वो लोग को नॉलेज से ज्यादा आपको कम्युनिकेशन स्किल चेक करता है, पर्सनैलिटी चेक करता है। तो दैट इज नॉट इन कमिंग फ्रॉम योर, वो भी लोग देखता है स्माइल, बॉडी लैंग्वेज, एवरीथिंग दे आर चेकिंग। वो चीज आपको अगेन इंप्रूव करना पड़ेगा, बिकॉज दे वांट समबडी हु इज वेरी गुड इन कम्युनिकेशन, इंग्लिश, बॉडी लैंग्वेज, स्माइल, वो सब मिसिंग था आपका। तो ये दो चीज में आपको काम करना है, एक तो मेमोरी में, और दूसरा आपका कम्युनिकेशन स्किल, स्माइल, ये सब चीज में। बिकॉज 10 में से आपको 6 आंसर भी आएगा, दे विल टेक यू। पर आपका जो कम्युनिकेशन स्किल, इंग्लिश स्पीकिंग, स्माइल, ये सब चीज ज्यादा मायने देगा। आप आंसर बोलते बोलते रुक जाता है, रुकना नहीं है। तो वो मतलब आपका जितना भी प्रॉब्लम हो रहा था। हाँ हाँ, तो आपको जितना आ रहा है बोल के, आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट राइट नाउ, ऐसे कर स्माइल करके आपको आगे बढ़ जाना है। और आप थोड़ा रुक जा रहा है, वो चीज वो हो रहा था। और ये इसलिए हो रहा है बिकॉज आपको आंसर्स का फ्लो ठीक से याद नहीं आ रहा था। आपको एक आंसर को लिखना पड़ेगा और फिर काइना के सामने 3 4 बार बोलना पड़ेगा। ये सब चीज आपको इम्प्रूव करिए। बाकी टेक्निकल पार्ट में आपको इंडेक्स 115, 116, 109, ये ज्यादा अंदर में ईसीएल का जर्नल एंट्री, ईसीएल अकाउंटिंग जर्नल एंट्रीज वगैरह ही पूछेगा ये लोग। मैकेरी का फाइनेंशियल्स हो गया, आपने फाइनेंशियल्स भी सही से 19,000 था, 18,000 था, उसमें थोड़ा गड़बड़ कर रहे थे। तो वो जो चीज है वो थोड़ा देख लीजिएगा। फिर माइक्रो इकोनॉमिक जो करंट अफेयर्स है, उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करिए कि करंट अफेयर्स में इसको क्या इम्पैक्ट होने वाला है मैकेरी को लेके। ये सब चीज आपको इम्प्रूव करना है। मेरे सबसे कम्युनिकेशन स्किल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, और मेमोरी स्किल का आपका प्रॉब्लम है। आपका बजट का अमेंडमेंट भी ठीक से फ्लो में आप नहीं बोल पा रहे थे, तो वो सब चीज थोड़ा सा। तो ये तभी होता है जब अपनी का मेमोरी स्किल स्ट्रांग नहीं होता। तो मेमोरी को स्ट्रांग करिए आप अपना। मेमोरी का प्रॉब्लम मेरे को जो दिखाई दिया, क्योंकि आपको कोई भी आंसर में ऐसा नहीं आ रहा था, एक भी आंसर नहीं था जो आपने फटाफट बोला हो, ऑन द फ्लो बोला हो। तो वो एक प्रॉब्लम है आपके साथ। तो ये इंटरव्यू में ये बहुत लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होता है। ये क्यों होता है? बिकॉज का मेमोरी का प्रॉब्लम है, आपको मेमोरी का प्रॉब्लम है। मेमोरी को स्ट्रांग करिए, एक एक आंसर को आपको क्लीनली बोलना है। बिकॉज अगर आप रुक जाओगे ना बार बार में, तो उसको फिर देने में डर लगेगा आपको, कोई भी काम तो डर लगेगा कि आप कर पाओगे। और दूसरा, स्माइल नहीं आ रहा था फेस में, तो दैट इज अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि थ्रू आउट द आपका इंटरव्यू आपका स्माइल होना बहुत जरूरी है। और आपका बीच बीच आपका पैसे करके बैठा था, ये सब भी इंप्रूव करना पड़ेगा। आपका फुल बॉडी पोस्चर में आपका पूरा वो होना बहुत जरूरी है। तो ये चीज भी आप ध्यान दीजिए। ये होता है बिकॉज आप पहले बार दे रहे हैं, ये सब हो रहा है कि हम लोग इतना ध्यान नहीं देता। मैंने इतना तैयारी दे दिया, मेरे को पता चल गया। तो ये चीज है, जब आप बैठा है तो आपको पूरा आपका फुल बॉडी पोस्चर दिखना चाहिए सामने वाला को, और आपको स्ट्रेट बैठना है। ये सब चीज भी आपका मेरे को लगता है इंप्रूव करना पड़ेगा। स्माइल होना, बॉडी पोस्चर, एवरीथिंग शुड बी देयर। स्माइल होना बहुत जरूरी था। और आंसर्स को क्लीनली बोलेगे, अगर नहीं आया बोला आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट द आंसर राइट नाउ, ऐसे करके, तो मेरे हिसाब से ज्यादा करके चांसेस है। और एक्साइटमेंट होना बहुत जरूरी है, वो एक्साइटमेंट भी थोड़ा कम था। तो आंसर्स में एक्साइटमेंट होना बहुत जरूरी है। यू आर डैम एक्साइटेड टू ज्वाइन दैट कंपनी। समझ रहे हैं ना? टेक्निकल पार्ट में मैं बता दें, 115, 116, 109, ये सब चीज आप जाइए। आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस वगैरह एडवे है, ये तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछेगा, जो है वही पूछेगा आपको। समझ रहे हैं ना? ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होने वाला है। और करेंट अफेयर स्ट्रॉन्ग करिए थोड़ा सा। और करंट अबाउट द अफेयर्स। ग्लोबल इकोनॉमिक्स का क्या होगा इसमें, करिए इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म्स में, और क्या हो सकता है। मैक्वेरी तो वो मैं कैसे पढ़ूँ, लेकिन मतलब मैंने इसे इंटरव्यू देखा हाँ, था एनुअल वीडियो। रिपोर्ट पढ़िए जाके। एनुअल रिपोर्ट में तो क्या क्या लिखा है, कुछ एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड करिए। हाँ, एनुअल रिपोर्ट में कुछ ना कुछ वो लोग लिखा रहता है उसके बारे में, जो कि हम लोग का क्या ठीक। आउटलुक है, फ्यूचर आउटलुक क्या क्या फर्क पड़ने वाला है। तो उससे आपको बहुत कुछ मिल जाएगा इसका इन्फॉर्मेशन। समझे? तो वो एनुअल रिपोर्ट एक बार गो थ्रू करिए, उसमें लिखा रहता है कि फ्यूचर आउटलुक क्या है, व्हाट आर प्लान्स, वो सब चीज। बेसिकली आपको जो स्ट्रेंथ है उसमें टीम लीडरशिप, लीडरशिप स्किल, नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन स्किल बोलना है, आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई सेल्फ। और वीकनेस में आप बोलना है कि हमको हड़बड़ी बहुत रहता है, उसके कारण हो गया। बाकी आपका टीडीएस वगैरह ये सब चीज कुछ लगता है इधर उधर से निकाल के, ऑडिट वगैरह तो कोई ना, डाइवर्सिफाइड नॉलेज मेरा अच्छा था, ऑडिट, टैक्स, ये सब चीज का। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपका हो जाएगा, कुछ नहीं है। इसके साथ आप अपना दूसरा भी कंपनीज के बारे में पढ़ने लग जाइए। आपको कम्युनिकेशन स्किल में बहुत काम करना पड़ेगा। आपको याद नहीं रह रहा है चीजें, और याद करने का जल्दी जल्दी कोशिश करें याद रखने का, लेट तक तो ये पढ़ना पड़ेगा सर, आपको। ये प्रॉब्लम तो है मेमोरी की, अभी से नहीं है, मतलब जैसे जैसे एग्जाम हाँ। क्लियर हो गई, लेकिन बहुत दिक्कत हुई थी मुझे। हम्म, वो ठीक है, ये मुझे एक मीटिंग दो तो साल खत्म हो से। जाएगा, मैं आपसे बात कर लूंगा। ठीक है जी, ओके। ठीक तो है। ठीक है जी। ठीक है।